Dear students, today we start with another topic, that is a pentose phosphate pathway. This pathway is also called as hexose monophosphate shunt. In this pathway, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it is a parallel pathway है to the glucose that generate NADPH and pentoses, that means 5 carbon sugar, which is while it does involve oxidation of glucose, its primary role is anabolic rather than catabolic. मतलब की है बेटा कि ज़्यादातर ਆਪਾਂ जे कार्बोहाइड्रेट मैटाबॉलिज्म च ਆਪਾਂ कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं कि एनर्जी जी है ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज तो सानू मिलती है वाया ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब्स साइकिल. ये मेजर अपना साइकिल अपनी बॉडी च प्ले करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने वास्ते. बट ये नहीं है कि जे किसी कारण करके जिहड़ा ग्लाइकोलाइसिस या सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं चल रहा या वो प्रॉपरली उन्नी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होएगी बॉडी च. सो एक पैरेलल पाथवे जिहड़ा है that is called as a pentose phosphate pathway. ठीक है, Wedberg's Dickens pathway भी कहा जाता है. It is mainly occur in the mammary gland, adipose tissue, liver, gonads, adrenal cortex, RBCs. So it takes place in the cytoplasm like glycolysis. This pathway start with the 6 carbon sugar glucose 6 phosphate. There are 2 distinct path या phases in this pathway. इस pathway ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ pathway ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, means synthesize ਹੁੰਦੇ ਨੇ. anabolic reaction ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ compounds ਨੂੰ बनाने वास्ते हेल्प करते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट फेज है इन पाथवे. फर्स्ट फेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज एंड which NADPH is generated, and second phase is called non-oxidative synthesis of 6 carbon compound. So that means it occur in the cytosol, means cytoplasm ਦੇ ਵਿੱਚ. In plants most step takes place in plastids. ठीक है, so that means इत्थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ stress किस गल दी ਆਪਾਂ कह रहे हैं कि ये की है, rather it is a anabolic pathway. Secondly 2 phases ने, one is oxidative and another is called as a non-oxidative synthesis of. so ये ਜਿਹੜਾ phase है ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ. so जे majorly ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ divide करिए then this phase jada hai that is a the pathway ne. so it is a here indicating that apa kaise कि divide into 2 parts. One is called as a oxidative phase and second is called non-oxidative phase. so glucose main jada shuru karde a glucose will converted with the help of hexokinase into a phosphorylation hundi and it is converted into glucose 6 phosphate. And by this, from this a starting product is the etho kiya there will be a stepwise reaction. Glucose 6 phosphate is converted into a 6 phosphogluconate या glucooctanate, and there will be again it is a 6 carbon, it is again 6 carbon compound, and there is the step is called as a dehydrogenation process and the enzyme is called glucose 6 phosphate dehydrogenase. NADPH converted into NADPH2, that means energy is produced. ठीक है, then next second step that is hydration. ठीक है, so that is a hydration जड़ा है. this hydration process जड़ा है उसदे विच water जड़ा है वो add हुंदा है and there will be what 6 phosphogluconate या glucolactone is changed into 6 phosphogluconic acid. ठीक है, या gluconate भी कहते हैं आप उसनो.
and there will be a enzyme called as a simple phosphogluconate hydrolase enzyme, ठीक है, क्योंकि water add हुआ hydrolase, and उस तो बाद ਜਿਹੜਾ third step है 6-phosphogluconate is converted into a ribulose 5-phosphate। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਿਬੂਲਸ 5-ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ देयर विल बी ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ देयर इज डबल कंपाउंड, सो दैट इज डीकार्बोक्सिलेज 6-ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਬੂਲੋਸ 6-ਫਾਸਫੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6-ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, that is called as a stepwise there will be a converted into xylose 5-phosphate and ribulose 5-phosphate, ribose 5-phosphate, so with the help of this, and they are isomerase with one another। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ। 7 ਕਾਰਬਨ, ਰਾਈਬੋਸ ਇਜ਼ ਅ 5 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ देयर विल बी व्हाट दिस राइबोस ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਬੋਸ 5-ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਜ਼ਾਈਲੋਫਾਸਫੇਟ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਲਿਸਰਲਡੇਹਾਈਡ 3-ਫਾਸਫੇਟ ਐਂਡ ਸੂਡੋ ਹੈਪਟੋ 7-ਫਾਸਫੇਟ। it is 7 carbon compound, it is a 3 carbon compound, it is a 5 carbon compound, so that means a 10 carbon compound बनना सीगा, 7 A बन गया, दूसरा 3A। you know that this glyceraldehyde 3-phosphate it can be enter into glycolysis and produce energy, or there will be a isomerization तो बाद next section जड़ी है ਆਪਾਂ कहने trans aldolase जड़ी है enzyme is there and it converted into fructose 6-phosphate and erythrose 4-phosphate, ठीक है। so इस दे नाल की है fructose is a 6 carbon compound, ribulose is a again की है 4 carbon compound, so again 10। now ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ xylose 5-phosphate ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ this xylose 5-phosphate ਦੇ ਕੁਝ molecule combine with erythrose to give rise to glyceraldehyde 3-phosphate and fructose 6-phosphate, they both can be enter into glycolysis। so that means सिर्फ डायरेक्ट TCA साइकिल या साडे कोल नहीं है कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी, so there is a this pathway is another pathway which can be produce a energy, ठीक है। so after that ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ overall ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰੇ ਕਿ there is a ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ this process ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ NADPH ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है। सो उस दे विच जदों आपां रिएक्शन वाइज गल कर रहे हैं, सो दिस जिहड़ी है स्ट्रक्चरेशन असीं 6 कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स जिहड़े है उस दे तो शुरू करदे आ एंड 6 मॉलिक्यूल्स जे प्रोड्यूस होंदे सारे को 12 NADPH प्रोड्यूस होंदे आ इन दिस फॉस्फोरिल रिएक्शन दे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये है जी हुण क्वेश्चन ये राइज हुंदा है कि ये जिहड़ा पाथवे है इसदा कोई सिग्निफिकेंस है। दिस इज अनदर जिहड़ी है पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चराइजेशन जिहड़ी है आपां दिस इज अ नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे असीं याद नहीं क्योंकि पहला तुहानूं दिखा चुके सेम सिंपल कंपाउंड्स ने एंड देन नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, ठीक है। सो इस दे अकॉर्डिंगली आपां लास्ट आपां कंक्लूड करदे हां कि जिहड़ा सिग्निफिकेंस की है HMP दा। सो ये अगे भी पहला स्टार्टिंग दस्सिया कि इट इज अ पैरेलल पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस ते TCA साइकिल दे। then NADPH जिहड़ा है are used directly in synthesis reaction forming phospholipids in liver, fatty acid in adipose tissue च बनाने च help करदा। the ribose 5-phosphate formed in the pathway इस दे विच जिहड़ा है ਆਪਾਂ कह रहे हैं, so this compound जिहड़ा बन रहा है
एक ही अपन कितने जिहड़ा ये मिल रहा जिहड़ा है सो दिस कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड जिहड़ा रिबुलोज so that it is another type they help in a synthesis of RNA ठीक है DNA ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ then ATP coenzyme NAD then fructose 6 phosphate ਜਿਹੜਾ ਹੈ so this compound ਜਿਹੜਾ produce ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ this can be and glyceraldehyde 3 phosphate ਜਿਹੜਾ ਹੈ as well as this ਇਹ ਜਿਹੜੇ glyceraldehyde 3 phosphate produce ਹੋ ਰਹੇ in this pathway may be metabolized in a glycolysis to produce energy glucose 6 phosphate and we can say fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate एक glycolysis च enter कर सकते हैं another ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ that was a glucose 6 phosphate may be resynthesized from the fructose 6 phosphate fructose 6 phosphate तो अगेन की है साडे कोले glucose 6 phosphate produce हो सकता है and this glucose 6 phosphate जेड़ा produce हुंदा that can be again enter into the compound now एक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ this compound non oxidative phase ਦੇ ਵਿੱਚ pseudo hepto 7 phosphate it is also formed in this pathway and this is a bio synthesis ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ Ribulose 5 phosphate formed in this pathway is for a major importance in the reaction involving in photosynthesis. So A hai beta is the significance and another pathway. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਪਾਥਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕਸ